Hi, welcome to the next session. In the previous session, we have seen how merge sort works. In this session, we will see how quicksort works. What is quicksort? What is the algorithm of it? And how it is implemented in C++. So quicksort is basically a divided concur based algorithm, which is as same as merge sort. It is based on the idea that if all the element to the left of the element is less than it, and all the element to the right of the element is greater than it, then the element is considered to be in sorted position. Now, how this algorithm works? So, before moving on to the algorithm, let's see the real world implementation of that particular element. So, let's say we have elements. So, before moving on to the implementation part, before moving on to the implementation part and see how algorithm works, let's take a real world example of a sequence of array. So let's say I have an array of element 9, 15, 7, 11, 14, 5, 2, 8, 4. Now this is our array. So this first element is considered to be as low element. Now we have multiple queries. Uh, First we have to select the pivot element. So what is pivot element? Element is the element which need to be placed at a sorted position. सॉर्टेड पोजीशन में अगर हमें इस 9 एलिमेंट को रखना है तो हम इसको एज अ पिवोट कंसीडर करेंगे। लो एलिमेंट यहाँ पर 9 है। एक्चुअली लो की वैल्यू जो है वो हमारे एरे का फर्स्ट इंडेक्स होती है। पिवोट एलिमेंट उस लो के ऊपर एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट होता है। वी विल कंसीडर दैट दिस 4 is not the last element. This infinite element is our last element और ये infinite element का इंडेक्स भी इनफाइनाइट है और इसको हम हाई बोलेंगे और इस लोकेशन को हम जे बोलेंगे। So the location will be called as j and the element will be called as high element. So, this is the index of that element and high is the infinite element. So what we are going to do here is 9, 15, 7, 11, 14. सबसे पहले हम यहाँ पर एक आई इंडेक्स क्रिएट करेंगे जो हमारी पहली पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ पर लो कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लो को मूव नहीं कर सकते, हम आई को मूव कर सकते हैं। इसलिए हम आई एज अ आइटरेटर वेरिएबल ले रहे हैं और जे एज अ आइटरेटर वेरिएबल ले रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर इनफाइनाइट से चालू कर रहे हैं, यहाँ पर 0 से चालू कर रहे हैं। नाउ आई को हम तब तक इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक हमें पिवोट से बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए, और जे को हम तब तक छोटा करते रहेंगे जब तक हमें पिवोट से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाए। आई को जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो एज सुन एज आई विल रीच नेक्स्ट पोजीशन like here, it will find 15, so it will stop here, and as soon as j will find element smaller than 9, it will stop here. तो j को पहला ही एलिमेंट जो मिला है वो 9 से छोटा मिला है। तो आफ्टर रीचिंग टू दिस डेस्टिनेशन हम i और j के एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे। सो arr of j and arr of i will be swapped together. So 9, this 15 will get replaced by 4 and the rest of the elements will remain same. 14, 5, 2, 8, 15 and infinite. अब i और j की पोजीशन हम यहाँ से अगेन
यहाँ से आई की पोजीशन हम इंक्रीज करने लगेंगे और यहाँ से जे की पोजीशन हम डिक्रीज करने लगेंगे। तो आई इंक्रीज होते होते यहाँ पर 11 पे रुकेगा। एज यू कैन सी 11 इज ग्रेटर देन 9। और जे इतना ना ट्रेवर्स करते हुए देखेगा कि 8 एलिमेंट जो है वो 9 से छोटा है, तो जे यहीं पर रुक रहा होगा। अब अगेन मैं यहाँ पर एक आफ्टर स्वैपिंग, इसकी स्वैपिंग करने के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वो क्या नया एरे होगा जो हमें मिल रहा होगा। तो वो ये एलिमेंट है 15 एंड इनफाइनाइट। नाउ आफ्टर गेटिंग दिस एरे हम आई और जे को फर्दर इंक्रीज करेंगे। तब आई की वैल्यू आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 14 है और यहाँ पर जाके स्टॉप होगी। और जे की वैल्यू यहाँ पर 2 है, जहाँ जहाँ पर रुकेगी। 2 वो एलिमेंट है जो 14 से स्वैप होने वाला है। तो नया एरे अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, नीचे जगह का मैं मुझे ऊपर से थोड़ा सा रब करना होगा। 9 4 8 2 5 14 11 एंड 15। मैं ऊपर से थोड़ी सी जो ये व्हाइट बोर्ड है उसको मैं हटाना चाहूंगा, so that it will be clearly visible to you. Now this this I will increase by one further. मैं दोबारा उस एलिमेंट एलिमेंट्स को लिख देता हूँ। 9 4 7 8 2 5। मैं उस एलिमेंट को रिपीट कर रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स को। 11 15 है इनफाइनाइट। अभी जो करंट पोजीशन है आई और जे की वो है यहाँ पर 2। आई की पोजीशन है और जे की पोजीशन है यहाँ पर 14। because this was the last element which was shared by us. अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, इस आई को हम दोबारा से बढ़ाएंगे और इस जे को भी हम दोबारा से बढ़ाएंगे। जैसे ही हमें आई जो है आई 9 से बड़ा एलिमेंट मिलता है तो हम वहां पर रुकेंगे। और जैसे ही हमें 14 से जैसे ही हमें 9 से छोटा एलिमेंट मिलता है 14 के बाद, तो हम वहां पर रुकेंगे। तो आई को हम पहले बढ़ा देते हैं। वी विल इंक्रीज आई। आई को हम बढ़ा देते हैं। आई को हम बढ़ाते बढ़ाते अगली बार कहाँ रुकेंगे, तो 9 4 7 8 9 4 7 8 then 2 then 5 then 14 will be the position. This will be the position of I. And where is this J located? तो J हमारा लोकेटेड है यहाँ पर 5 पे। I hope they are differentiable. This is I and this is J. Now, now we can swap this 5 and 14, but the problem is we are not allowed to do so. Why? Because this I and this J have crossed together. But after the crossing of I and J, now you are not allowed to do so. So you are allowed to swap this pivot element with J, because this J is actually the position of our pivot element. So I'll again clear the drawings and write my not final array, but we have completed one task. So this 5 is swapped by 9. Then I'm writing the array. Now, as you can see, this 9 is placed at the right position. The element to the left of 9 are all smaller than 9, and the element right to the 9 are all greater than 9. So I believe, and you can also see from the given array, that this 9 is placed at the right position. Now this j, this j will act as an infinite element, and we will again repeat the same thing with the help of recursion. So when will this stop? So as soon as our low and high will become equal to each other, then it will stop. So
इसकी स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी? इसकी स्टॉपिंग कंडीशन ये होगी कि जब हम ऐसे करते 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 लो और हाई तक जाते रहेंगे, और लो और हाई जब हमारे बराबर हो जाएंगे तब हम स्टॉप कर देंगे। तो अब हमारा टास्क है इस 5 से लेकर 9 तक के बीच के सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, लेकिन इस तरीके से कि हम इस 5 को पिवोट कंसीडर करके द सेम टास्क विल बी रिपीटेड अगेन विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन, एंड you will find the right position for 5. So this position will repeat, this whole thing will repeat again and again, and finally you will get your sorted array. But remember, this j is will act as a high to the न्यू फंक्शन। उस फंक्शन में जो रिकर्सिव कॉल होगा उसमें इस j के इस j इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो एक इनफाइनाइट एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, तभी हम इस पूरी बचे हुए एरे को सॉर्ट कर पाएंगे, क्योंकि वी हैव नथिंग टू डू विथ 9। 9 is placed at the right position, we don't have to disturb 9. So keeping 9 aside, 5 4 7 8 2 need to be sorted by us. तो मूविंग टू द पार्ट ऑफ आर कोडिंग, कि हम इसमें कैसे एल्गोरिदम को रन करते हैं, हम एल्गोरिदम को कैसे लिखते हैं। तो उस एल्गोरिदम को लिखने का जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा? तो व्हाट वी विल डू, तो लेट मी क्लियर ऑन माय ड्राइंग फर्स्ट। So what is our next, what will be the next move, which is basically writing of algorithm. So we have to select, the very first thing is we have to select the we have to select our pivot element. After selection of pivot element, we will increment increment I from low, increment ri from low we find until we find arr of I, arr of I, arr of I greater than our pivot element, greater than our pivot element। जब तक हमें pivot element से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक हम I की वैल्यू हमेशा बढ़ाते रहेंगे। This will be our next step after the selection of our pivot element. Pivot element can be first element, it can be last element, or it can be any random element. But now the same thing is going to be done with the j as well. So we will decrement j from low, from not low, from high, until we find arr of I, arr of j, sorry, less than less than less than our pivot element, less than our pivot element। जब तक हमें arr of j की वैल्यू पिवोट एलिमेंट से छोटी नहीं मिल जाती तब हम j की वैल्यू डिक्रीज करते रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज इफ I is less than j, अगर हमारा I j से छोटा होता है उस केस में हम then swap arr of I and swap arr of I, arr of j। This will be our next step, जिसमें हम arr of I, that is उस पोजीशन जिस तरह हमने सबसे पहले एक स्वैपिंग की थी, सबसे पहले जिस एलिमेंट्स की हमने स्वैपिंग की थी ठीक उसी तरह यहाँ पर हर बार स्वैपिंग होती रहेगी, और एट लास्ट वी हैव टू स्वैप आर पिवोट एलिमेंट। मतलब सारा स्वैपिंग होने के बाद जब हमारा आई जे से छोटा नहीं रहेगा, आई की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और वो जे को क्रॉस कर चुकी है, उस केस में हमें ARR ऑफ जे, यानी कि स्वैप वी हैव टू स्वैप आर लो एंड वी हैव टू स्वैप आर ARR ऑफ जे। सो वी हैव टू स्वैप, या यहाँ पर सिंपली लिखें स्वैप लो टू ARR ऑफ जे, बिकॉज हम इसीलिए हमने लो जो है उसको मूवेबल नहीं रखा, क्योंकि लो जो है वो हमारा हर बार चेंज हो रहा होगा। सो दिस इज द एल्गोरिथम व्हिच नीड टू बी फॉलोड बाय यू। अब इसको हमें कोड कैसे करना है, तो दिस इज ऑलमोस्ट दिस इज वेरी मच क्लियर, and 50% of our problem is solved. Theoretically now all we need to do is just get our hands dirty on how to write its code. तो उसको मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ, वेट। Now I am going to start my code here.
that, first of all, I have now this is our main function. We'll create a array in main function. Let's say this is the array of size 10, and I will take the elements such as 7, 6, 5, 4, 9, 1, 10. So these are the elements from 1 to 10. They are in unsorted position. They are in unsorted position. I'll make a call to a quick sort. Now this quick sort, what it will do? तो इस क्विक सॉर्ट फंक्शन का काम होगा बेसिकली आपके फंक्शन को, विच इज द एक्चुअली पार्टीशन फंक्शन, उसको रिकर्सिव कॉल देना है ना। तो रिकर्सिव कॉल देने के लिए हम यहाँ पर इस एरे को बनाएंगे। लो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 है और हाई की वैल्यू यहाँ पर 10 है। हम इस एरे को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। एरे की वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर हम एरे को प्रिंट करते हुए नजर आ रहे होंगे। ARR of I with the values like this. तो इस एरे को हमने प्रिंट कर दिया है। हम एक्चुअली इसी एरे को ओवरराइट करेंगे। अभी अगर आप इस कोड को रन करोगे तो आपको जो एरे अभी आपने सिंपली लिखा हुआ है उसी एरे को आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, अगर मैं इसको आपको रन करके बता दूं और इस एरे को मैं प्रिंट करके बताऊं तो इस एरे की वैल्यूज वही होंगी जो अभी करंट में आपने इंसर्ट करी। नाउ दिस एरे इज गोइंग टू बी चेंज्ड। ठीक है, और ये एरे चेंज कैसे होगा? Now how this array will get changed? Now this will get a call quick sort. This is the quick sort which will take input as an array in ARR and comma int and comma int height. So if low is less than high, अगर लो हाई से छोटा होता है तभी हम रिकर्सिव कॉल देंगे। और किसको देंगे? तो वो हम देंगे पार्टीशन फंक्शन को। पार्टीशन फंक्शन को हम कॉल देंगे। This is the partition function which will take low. After that we will take a call और हम यहाँ पर लो के साथ हम j को रिटर्न करेंगे क्योंकि j will act as an infinite element और the same thing is going done for the rest of the element जिनका इंडेक्स j+1 से स्टार्ट हो रहा है उनके लिए इस तरीके से एलिमेंट्स जो है वो सॉर्ट होते हुए नजर आएंगे। Now I'm going to write my partition function. Partition function में हम यहाँ पर array लेंगे। array के साथ साथ हम यहाँ पर लो और हाई भी लेंगे जो हमारे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स है। इसके बाद I will create one pivot element here. So pivot is basically ARR of L. Now I will create some values such as I and J जो indexes हैं और I की वैल्यू हम लो से चालू करेंगे और J की वैल्यू हम I से चालू करेंगे। इसके अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे। We will put one condition here while I is less than J. जब तक I J से छोटा है तब तक हम क्या करते रहेंगे? हम I की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे। तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक हमें ARR of I less than equal to
पिवोट ना मिल जाए। आई की वैल्यू हम तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक हमें छोटा एलिमेंट मिल रहा है, हम उसको तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमें उस एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। हम जे की वैल्यू माइनस करते रहेंगे। तो केस जब हमें ए आर आर ऑफ जे की वैल्यू क्या मिल रही है, पिवोट से बड़ी मिल रही है, तब तक हम यहाँ पर इसको बढ़ाते रहेंगे। नाउ द रीजन why I am using do while loop here is that I want to increment my I first and then I want to compare with my pivot element। क्योंकि अगर मैं पहले ही कंपेयर करूंगा और पहले ही कंडीशन चेक हो जाएगी तो फिर हमारा आई आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। और आफ्टर द सक्सेसफुल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ आई एंड जे, मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या मेरे आई की वैल्यू जे से छोटी है। अगर मेरे आई और जे की वैल्यू अभी छोटी है और वो अभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर चुके हैं, तो मैं इन्हें स्वैप करता हूँ। एज सुन एज आई फाइंड कि आई और जे जो है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं और ये वैल्यू अब एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पर स्वैप करेंगे हमारे लो एलिमेंट को हमारे जेथ इंडेक्स के एलिमेंट। जेथ पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट है वो एक्चुअली हमारा सॉर्टेड इंडेक्स है हमारे पिवोट एलिमेंट के लिए। उससे पहले के सारे एलिमेंट सॉर्टेड है, उससे सॉरी क्योंकि उससे पहले के सारे एलिमेंट उससे छोटे हैं और उससे बाद के सारे एलिमेंट उससे बड़े हैं। तो आई विल रिटर्न j, this j will be the index of my sorted element और ये index as a infinite element, इस index का element act करेगा as a infinite element for the next execution of my this recursive function। तो now I'll make it, I'll give it a call। मैंने ये एलिमेंट्स यहाँ पर लिए हैं, कुछ रैंडम एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर ये मैं इनका साइज में साइज ऑफ ऑपरेटर से निकाल रहा हूँ और उसके बाद मैं ऐसे आर्गुमेंट में लोअर हाई को देकर उसी एरे को मैं, क्योंकि मैंने उसी एरे को ओवरराइट किया है, हर वक्त मैंने उसी एरे को ओवरराइट किया है, तो मैं उसी एरे को प्रिंट करना चाहूंगा और ये एरे आपको सॉर्टेड पोजीशन में दिख रहा होगा। मैंने लाइन नंबर 38 में उसको उसका साइज प्रिंट किया विच इज 16, मुझे नहीं पता था, और 3 से लेकर 96 तक सारे एलिमेंट जो है वो आप देख सकते हो ये सॉर्टेड होता है। So the thing here is that the time complexity for this algorithm is big of n log, which is far better than the rest of the algorithm. Just that's all for the today's lecture. See you in the next session.